Assalamu alaikum. My name is Zain Wahid, roll number 46. The topic we are going to present today is biological and pharmaceutical importance of nucleic acid. The other presenters with me are Anam Rahman, Abu Bakr Saif, Muhammad Zulkifal, Ansal Imtiaz, Usama Khalil, Maghisa and Nidar Fakat. The context of our topic the context of our topic are introduction of nucleic acid, biological importance of nucleic acid, gene therapy and its condition, DNA, DNA cloning, importance of nucleic acid in medicine, and nucleic acid based drugs. So, we start with the introduction to nucleic acid. What are nucleic acid? Nucleic acids are basically molecules containing information in the form of genes for protein synthesis. असल में न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं. व्हाट आर जीन्स? जीन्स are the part of DNA which contain information for synthesizing a particular protein. And these genes, these informations are inherited. Inherited means they are transferred from generation after generation. Because of these molecules, the the next generation looks like the previous one. दो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से जो अगली जनरेशन आती है, एक स्पीशीज की जो अगली जनरेशन आती है उसमें काफ़ी हद तक उसकी पिछली जनरेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब इन मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? इनको न्यूक्लिक एसिड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक फिश स्पर्म में डिस्कवर किए गए थे और इनकी जो नेचर थी एक एसिडिक नेचर थी. एसिडिक नेचर किस वजह से? The acidic nature of DNA is because of the presence of phosphate group. The phosphate group, and that phosphate is group is due to the presence of is due to the uh, and that phosphate group is derived from the phosphoric acid. Now, the components of nucleic acid. A nucleic acid has generally three main components. सब कंपोनेंट्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, डीएनए बेसिस वगैरह, लेकिन मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं. नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर. अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल का या फिर एक आरएनए मॉलिक्यूल का सेंट्रल एक्सिस, जबकि फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर है वो उसकी बैकबोन या फिर जो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं. हम लोग एक इन तीनों अगर हम लोग इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाएं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर को मिलाएं तो एक न्यूक्लियोसाइड बनता है. फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. एक न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, एक डीएनए का या फिर एक आरएनए का. अब न्यूक्लिक एसिड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, डीएनए और आरएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. The difference is DNA is a double-stranded molecule whereas RNA is a single-stranded molecule. डीएनए जो है वो एक इंफॉर्मेशन कैरियर है कि डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसने कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, किस तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है और कौन से अमीनो एसिड उस प्रोटीन के लिए चाहिए होंगे. जबकि आरएनए उस जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करता है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड्स को जॉइन करके आपस में लिंक करके वो प्रोटीन बनाता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग डीएनए को हम लोग कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन हाउस और आरएनए को हम लोग एक एजेंट कह सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि डीएनए से प्रोटीन के बीच का जो पार्ट है, जो बीच का उसका सारा सिनेरियो है वो आरएनए के थ्रू होता है. डीएनए से एक प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसके बीच में आरएनए का काम होता है. अब
डीएनए और आरएनए में जो मेन फ़र्क है वो है शुगर का। हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि एक न्यूक्लिक एसिड के तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोस शुगर। अब डीएनए में जो पेंटोस शुगर है वो हमारे पास है डी ऑक्सी राइबोस, एंड आरएनए में जो पेंटोस शुगर है वो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ राइबोस शुगर। डीएनए हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वो तो जो कि रिजाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि आरएनए न्यूक्लियस के अंदर जब, और उसके अलावा हमारे पास साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब आरएनए के मजीद तीन टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स की मदद से जो अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक कैरी करके लाते हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए डीएनए से राइबोसोम तक मैसेज लेकर आते हैं, जिसके मुताबिक अमीनो एसिड्स को हमने अटैच करके प्रोटीन बनानी है। So this was the introduction to nucleic acid. The next topic we are going to discuss is biological importance of nucleic acid, and this topic will be presented by Magisa. I am Magisa. My roll number is 051. The topic I am going to present is biological importance of nucleic acid in general. Nucleic acids are naturally occurring chemical compounds that serve as the primary information carrying molecules in the cell. Basically, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं सेल के अंदर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं तमाम सेल की. They play an important role in directing protein synthesis. न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं. Scientists continue to identify new and different functions of nucleic acid on a regular basis. डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे. न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंट फंक्शंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस न्यूक्लिक एसिड्स की जो है वो ये है. न्यूक्लिक एसिड यूज्ड इन कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस. न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डिफरेंट जो डिजीजेस है उनको ट्रीट करने में यूज होता है, जैसे कि कैंसर है, दिल की बीमारियों में भी यूज होता है. दिल की बीमारी को ट्रीट करने में यूज होता है. The pharmaceutical perspective of nucleic acid based therapy present a comprehensive account of gene therapy. अगर हम न्यूक्लिक एसिड की फार्मास्यूटिकल के अंदर इम्पोर्टेंस देखें तो वो जीन थेरेपी को ट्रीट करने में भी यूज होता है. Nucleic acid controls gene regulation, transcription, translation and replication. न्यूक्लिक एसिड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है सेल की. न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ड्रग्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस. जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड ट्रीटमेंट करने में हेल्प आउट करता है. न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे कि दवाइयाँ वगैरह बनानी होती हैं तो उनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. This was my topic and the next topic is gene therapy which will be presented by Anam Rahman. It's Anam Rahman, roll number 45, and the topic that I want to present is gene therapy. Now, first of all, let me tell you that actually what is gene therapy? It's the type of therapy in which we introduce a foreign DNA or a new DNA into a patient to treat any particular genetic disease.
So now the question rises that why we introduce a foreign DNA into a diseased person. So basically, foreign DNA have a functional gene and it corrects effects of diseases. Those are caused by mutation. Now the second question is that how we use this foreign DNA to treat any particular genetic disease. So basically, we use selection of DNA having genetic pairs or gene pairs in them. Those are helpful in treating any particular genetic disease. When this technique was developed, this technique was basically developed in 1972, and this therapy can be used to treat many genetic diseases, for example, muscular dystrophy or cystic fibrosis. Now, there are how many parts or types of gene therapy? So basically, there are two types of gene therapy. First type of gene therapy is somatic gene therapy, and second type of gene therapy is germline gene therapy. As I discussed earlier, that gene therapy can be used to treat any particular genetic disease that is caused by mutation. So now the question arises that what is mutation? So you can say that mutation, I like to say that it's a term of any process in which it stops a gene from producing any functional product such as protein. Now here you can see a schematic diagram in which I have tried to present a person having sickle cell anemia. We want to treat this person having sickle cell anemia, and for this purpose we'll use gene therapy. So first of all, we have collected stem cells from the blood of the diseased person, and now we are going to correct or treat these stem cells, and basically we just want to make these stem cells healthier stem cells. So for this purpose, we have used beta globin gene from vector, and now finally we have corrected stem cells, and now we are going to transplant these corrected stem cells into the body of a person having sickle cell anemia. Now to conclude that what is gene therapy? Basically, gene therapy has a potential to cure several genetic diseases. And the fact that I want to share with you is we know that gene therapy is very helpful, but yes, it have a drawback or a disadvantage that its expression in human beings is very slow. So that's all from my side. A bundle of thanks for listening. And now, Nidha Rafakat's roll number 53 will present DNA cloning. And will let us know that what actually DNA cloning is. Thank you. Thank you, Anam. Nidara Fakat, roll number 53 here, and I'm here to present the DNA cloning. So we'll start. Introduction of, first of all, cloning means the exact copy, producing the identical copies of the object. So introduction of a foreign DNA molecule into a replicating presents or permits cloning or amplification. Amplification means just to increase the number of bodies which are produced as from the parental cells. In some cases, a single DNA fragment can be isolated and purified prior to cloning. More commonly, a clone, a nucleotide sequence of interest. The total cellular DNA is first cleaved with specific restriction enzyme. In order to clone a gene, first we have to cut it. Gene of interest is first of all cut it to the ends.
by any enzyme like restriction endonucleases. So they are cleaved at the ends and it produces, just like in the diagram, second fragment also produces with the DNA of interest with us. They are produced when they are cleaved, they are produced with the sticky ends at the sides. First is the total DNA is first cleaved with a specific restriction enzyme, just like restriction endonucleases, creating thousands of fragments. Each of the resulting DNA fragment is joined to DNA vector molecule to form a hybrid or recombinant DNA. जब इनसे recombinant DNA से restriction endonucleases से हमने इसके cleaves and cleavage side पे हमने इनके sticky ends produce कर लिए हैं, फिर ये आपस में fuse करते हैं. जो opposite sticky ends हैं वो आपस में fuse करते हैं और ये बनाते हैं recombinant DNA और hybrid DNA, having complementary ends fused into each other. So each recombinant DNA molecule carries its inserted DNA fragment into a single host where it is replicated. अब ये जो recombinant DNA है, we will transfer it to the single host by the in the form of the vector or plasmid, whatever it will be. तो इसको हम implant करेंगे into the host body, just like a bacterial cell हो सकता है, bacteria का cell हो जाए, हम अगर उसमें करेंगे implant तो ये जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल ग्रो करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, तो इसकी भी साथ साथ क्लोनिंग होती रहेगी. दिस इज द वे, जैसे एक जो सेल है, जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उससे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया और फिर उससे कॉपीज उसकी बनती जाएंगी. सो दिस इज हाउ क्लोनिंग प्रोसीड्स. As the host cell multiplies, it forms a clone in which every bacterium contains copies of the inserted DNA fragment, hence name cloning. इसी तरह बैक्टीरियल सेल जो होगा, जैसे उसमें अगर हम वो ग्रो करता है साथ साथ, तो उसमें मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी साथ साथ, और हर एक जो क्लोन बनेगा उसमें डीएनए इंटरेस्ट होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और उसमें वो फ्रेगमेंट मौजूद होगा जो कि जिसके स्टिकी एंड्स थे, और जो फ्यूज डीएनए लाइगेज विल हेल्प देम टू फ्यूज. वो स्टिकी एंड्स जो होंगे उनको फ्यूज करने में डीएनए लाइगेज हेल्प करेगा, जो उसके उनके बिटवीन बॉन्ड बनाएगा, और फिर ये हम वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे होस्ट में, और होस्ट इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा. दिस इज वी कॉल डीएनए क्लोनिंग. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन. My topic is importance in medicine. सबसे पहले थेरेप्यूटिक न्यूक्लिक एसिड. थेरेप्यूटिक वो टर्म है जो हम यूज करते हैं किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेडिसिन की डिस्कस करने के लिए हम थेरेप्यूटिक की टर्म यूज करेंगे. सेकेंडली, किसी भी सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए डीएनए की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड मेडिसिन होते हैं वो डीएनए इफेक्ट करती है जेनेटिक लेवल पर. सो ये डीएनए को सप्रेस करती है और किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट या डिजीज कॉजिंग स्पीशी को प्रोटीन सिंथेसिस करने से रोकती है. क्योंकि इसका इफेक्ट काफी डीपली होता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेडिसिन जो होती है इसकी स्पेसिफिसिटी भी काफी हाई होती है. सेकेंडली, हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं माइक्रो आरएनएस हैं, ऑप्टोमर्स, ये कैटेगरीज हैं न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेडिसिन की जो कि लेटर डिस्कस हुई हैं. उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है एक जेनेटिक डिजीज स्पाइनल मस्कुलर डायस्ट्रोफी. स्पाइनल मस्कुलर डायस्ट्रोफी की हमारे पास जेनेटिक डिजीज एग्जांपल है. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को इफेक्ट करती है. ये इतनी इंटेंस डिजीज है कि इसमें पेशेंट लेस देन 18 मंथ्स या 18 मंथ तक सरवाइव करता है. इसके लिए जो ड्रग हमारे पास है वो भी न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ड्रग है, जिसका नाम एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग है. उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो कोविड-19 अब कोविड-20 हो गया. इसके लिए भी जो वैक्सीन्स और मेडिसिन बनाई गई हैं वो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड हैं. सेकेंडली, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एज अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज करता है जितने भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेडिसिन है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेडिसिन है वो हाई स्पेसिफिसिटी शो करती है. इसी तरह उनके साइड इफेक्ट्स भी इसी वजह से कम होते हैं कि वो सिर्फ उसी प्रोटीन को इफेक्ट करती है जिसकी उन्होंने
सिंथेसिस रोकनी हो। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इंपॉर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल्स है। ये भी इससे सिमिलर है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो एज अ मेडिकल ड्रग हमने यूज करने होते हैं। इसके पहले न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर एंडोजीनियस मटेरियल्स। एंडोजीनियस मटेरियल्स मतलब वो मटेरियल जो किसी भी सिस्टम से ओरिजिनेट किए गए हो। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या टिश्यू या सेल्स which encode information. In pharmaceutics, nucleic acids are used for development of non-viral gene. Non-viral जीन से मुराद नेक डीएनए, वो डीएनए जिसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड नहीं होती। रिप्लिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन प्लाज्मिक डीएनए। अब किसी भी जीन को किसी भी सेल में इंसर्ट करने के लिए हम वेक्टर यूज करते हैं। वो वेक्टर हमारे पास नेक, प्लाज्मिड, लिपोप्लेक्स और पॉलीप्लेक्स हैं। उसके बाद अगले जो पॉइंट्स हैं उसमें हम न्यूक्लिक एसिड को किन डिजीज में इस्तेमाल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। कैंसर, कार्डियोवास्कुलर में जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, और ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे पास जो फेमस है वो है डायबिटीज मेलिटियस टाइप 1 या ग्रेव्स डिजीज। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और सिमिलरली द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए डिटरमाइंस द प्रोटीन लेवल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए डीएनए की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका सीक्वेंस, और कंट्रोल जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन, ये वो प्रोसेसेस जो कि इसमें यूज होते हैं। उसके बाद पोटेंशियल यूज ऑफ लिपिड्स, पेप्टाइड्स, पॉलीमर्स फॉर वाइवो डिलीवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग बॉडी, यानी ये भी न्यूक्लिक एसिड या जीन्स के ट्रांसफर के लिए हम लिपिड्स और पेप्टाइड्स को यूज करते हैं। उसके बाद द फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड therapy present a comprehensive account of gene therapy. That's it. Next will be represented by Anjal. Assalamu alaikum. My name is Anjali Das and roll number 49. My topic is nucleic acid based drugs. Actually, this is the branch which is used to treat the diseases, and here it is. The two main types of nucleic acid are deoxyribonucleic acid (DNA) and the ribonucleic acid (RNA). DNA is genetic material found in all living organisms, ranging from the single-cell bacteria to the multicellular mammals. One of the basic uses of nucleic acid is to produce such kind of drugs that do not interact and destroy non-target proteins. इस लाइन का मतलब ये है न्यूक्लिक एसिड और का जो मेन फंक्शन है वो नॉन टारगेट प्रोटीन्स को इफेक्ट होने से बचाना है। अब हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे ड्रग्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करते हैं, बट व्हाई द न्यूक्लिक एसिड्स आर इम्पोर्टेंट? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स ऐसी ड्रग्स की काइंड है जो कि साइड इफेक्ट में कम है। ये साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करती है। वो किस तरह से रिड्यूस करती है कि जो नॉन टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स हमें सेफ साइड पे रखने होते हैं, वो उन्हें सेफ रखती है, जबकि दूसरे ड्रग्स जो होते हैं वो उन प्रोटीन्स को भी हम जो है वो करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स available today work by interacting with certain proteins which are the cause of disease. However, they often have side effects as they also interact with non-target proteins. वही बात आ गई कि जो दूसरे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि जिन प्रोटीन्स को हमने सेफ रखना होता है वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड थेरेप्यूटिक्स based on nucleic acids or closely related chemical compounds are an emerging new class of therapeutics for treating unmet medical needs. अभी वो डिजीजेस जो मार्केट में न्यू है या ऐसी डिजीजेस जिनको क्योर करने का अभी कोई हमारे पास ड्रग जो है अवेलेबल नहीं है, न्यूक्लिक एसिड्स आर द बेस्ट ड्रग टू क्योर सच काइंड ऑफ डिजीजेस. They are capable of targeting a disease at genetic level by preventing expression of a disease-causing protein. अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं कि बाकी ड्रग्स
इंट्रोड्यूस हो जाए और उनको क्योर करते हैं बाय डिफरेंट मेथड। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक लेवल पे जीन को जाके वहां पे करेक्शन करते हैं, मींस वो डिजीज को उसकी रूट से इरेक्ट करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लिक एसिड ड्रग्स हैव categories. Next, the nucleic acid drugs can be divided into 6 categories based on their structure, target, and mechanisms of action. The nucleic acid drugs are of 6 kinds that are these: antisense, siRNA, miRNA, aptamers, decoy, CpG, oligo. Next is the table which shows the structure and target and mechanisms of all the drugs. First is antisense. Antisense contains single-stranded DNA or RNA in its structure, and its target sites are messenger RNA, pre-messenger RNA, miRNA, while the mechanisms contain the cleavage mRNA and exon skipping. This exon skipping is a new term और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फॉल्टी या किसी मिसअलाइंड जो हमारे पास जेनेटिक कोड हो उसको स्किप करके करेक्ट वाला जो कोड हो उसको पिक करना, दिस इज नोन एज एक्सॉन स्किपिंग। नेक्स्ट इज क्लीवेज miRNA. The next step is siRNA. Double strand RNA, hairpin type single strand is its structure. Messenger RNA is its target site. The mechanism of this is cleavage messenger RNA by RNA interference. And the next drug is miRNA. It contains double-stranded RNA in its structure. It is pre-messenger miRNA, single-stranded. And the target is mRNA. miRNA replacement is its mechanism. And aptamer is the next class. Single-stranded DNA and RNA are in its structure. Its target site is protein outside of the cell. The cell proteins are not its target, while the proteins which are inside the cell are its target. And the mechanism of aptamer is it inhibits the physiological effect of these proteins. And decoy is a double-stranded DNA. एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो decoy का टारगेट साइट है और यहाँ पर जाके इट इनहिबिट्स इट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द थिंग्स। CpG oligo, single-stranded DNA is its structure, TLRQ receptor is its target site, and adjuvant is mechanism. Adjuvant is also a new term, and actually this means it is using cancer treatment, means it is a term, it's not a treatment, it's a term. It means the process used after the process या drug used after the initial stages for suppressing the secondary tumor formation. So it is a substance which enhances the body's immune response to an antigen. The next are the combined uses of these drugs, these nucleic acid-based drugs: antisense, nucleotide, siRNA, messenger RNA consists of 15 to 25 nucleotides which are complementary or partially complementary to their messenger RNA. Complementary means that completes the thing. So these nucleotides are complementary to their messenger RNA and down-regulate the translation of target proteins. Here is the term down-regulate, which is the new. Down-regulate is actually a down-regulation process, a process by which a cell decreases the quantity of cellular components by which such as messenger RNAs and proteins in response to any external stimulus. Means कोई बाहर से stimulus आएगा और सेल अपनी जो सेल के कंपोनेंट्स है उन्हें डिक्रीज करेगा जिनके अंदर आरएनए या कोई प्रोटीन है।
Next is aptamers can recognize target proteins by their molecular structure and interact directly with the target protein. अब aptamers जो है वो टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो है वो क्योर करते हैं. Decoy and CPG oligo are designed to inhibit the activity of target protein through high affinity binding. So, decoy and CPG oligo inhibit करते हैं target protein की activity को by binding with those target proteins. Next is importance of these nucleic acids. These nucleic acids have now moved into a realm of being a lone therapeutic agent. Several of its kinds are in clinical development and many have received regulatory approval for human use. अब ये है, अब हमारे पास एक नए दौर में एक नए इरा में एंटर हो गए हैं जिसके अंदर इनकी इम्पोर्टेंस और इनके जो क्योर है is really helpful. And now many of them have the approval to be used on human bodies. With their specificity, functional diversity, therapeutic nucleic acids hold numerous promise. The functional basis of using nucleic acid as steps for genetic therapy in therapeutics is either inhibition of DNA or RNA expression, thereby halting production of abnormal proteins related to a disease while leaving all other proteins unaffected. So the main line is there. This means that कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनको इफेक्ट किए बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर अपने टारगेट प्रोटीन्स को टारगेट करती है और उन पर एक्शन कर कर उन्हें क्योर करती है. और जबकि सबसे बड़ा यूज और सबसे बड़ा बेनिफिट हमें इस चीज का ये है कि ये दूसरे प्रोटीन्स को इफेक्ट नहीं करती. This is what the nucleic acid based drugs were. Next will be summarizing of all the topic, importance of nucleic acids by Abu Bakr. Assalamu alaikum to all of you. I am Abu Bakr Saab and my roll number is 047. I belong to the group 5. Actually, our topic is very famous and very simple because number of the students already know about this topic because they have already studied in different levels in their study. And I am very happy because my colleagues already explained this topic very efficiently according to their level best. So this is the topic which has its application in number of our daily fields. And we cannot summarize it in simple 2 or 3 paragraphs in our simple words. So I try to my level best to summarize it. This is a topic, nucleic acid, which has not only its application in human beings but also has its application in different other organisms, from simple bacteria, virus to a huge organism that is whale. It helps us to solve different problems, to detect the criminals by gene sequencing. It improves the quality of the food, that is the corn, wheat, sugarcane, or chicken, etc. But also improve the quality of different organisms, that is the horse, cat, dogs, according to our desired traits. It not only detect the diseases but also cure these diseases by different methods, by producing different medicine, that is the insulin, etc.
it not only produce the food at large scale, but also used to produce different kind of the medicines by using different techniques like recombinant DNA technology, polymerase chain reactions, etc. So this is the topic we cannot summarize in simple two or three lines. So in last, I simple tell you that this is the chemical, that is the nucleic acid, which has application in all field of our life. Thank you. And please.